Dharavi, one of the largest and most densely populated slums in the world, houses over 1 million people within a mere 2.1 square kilometers. This intense overcrowding, combined with insufficient health infrastructure and sanitation facilities, has created a serious health crisis that endangers the well-being of its residents. With one healthcare facility serving approximately 1,440 residents in Dharavi, the disparity becomes evident when compared to the broader city of Mumbai, where one healthcare facility serves around 660 residents. This stark contrast underscores the healthcare inadequacies within Dharavi. The health crisis in Dharavi is not just about the illnesses that plague its residents. It is about the lack of systemic healthcare system. If you look around, you see open sewers, you see overcrowded places, and you see the lack of a proper disposable system for its waste disposal. And all of this has caused not just its residents, but especially its elderly and the children to be susceptible to preventable illnesses. The massive redevelopment project of Dharavi by the government of Maharashtra is set to transform it into a modern urban space where health and well-being take center stage. This state government initiative focuses on improving access to clean water, sanitation and healthcare facilities. In Dharavi, the women at night times have to go to the public toilets. Okay? That is the biggest problem that comes for the woman. She has to take someone along with her when she goes to the public toilet. Today, even though when we are talking about every household should have a toilet, Dharavi still doesn't have it, and that dream will somehow gets achieved with the development coming in. The redevelopment of Dharavi focuses on better living conditions, including well-equipped hospitals and clinics. The plan aims to reduce the spread of diseases like tuberculosis, cholera and dengue, while also providing preventive care for vulnerable populations such as children and the elderly. This revitalization has the potential to greatly enhance the quality of life for Dharavi's residents, offering them the chance to live healthier, more dignified lives in an environment that supports their well-being. Millennium Development Goals, among them, the very basic is drinking water. So none of the houses have drinking water, legal supply, right? Some of them might be taking illegally and all that. So that's fine, but a house without water, and you have to go to community water supply, right? And third is the space without any ventilation, without any sunlight, as I just mentioned. So three aspects: living without drinking water, without a private toilet. That life should change to a house with its pakka construction, with an entitlement. Second is with a drinking water at home, so that people need not go out, women or children or men also. And third is about the toilets, because our ladies and gents, boys, girls, they require a privacy, private toilets. So with this, I am sure the quality of life will improve substantially. As per the bylaws, said so many houses, you will have so many balwadis, you will have so many schools, there will be masjids, there will be temples, churches, all of that is all provided for, and there is nothing that it will be a better area than 60% of your Mumbai or 60% of your other urban areas. The redevelopment of Dharavi is poised to revolutionize healthcare services for its residents by introducing modern medical facilities and infrastructure. Additionally, improved sanitation systems and reliable access to clean water will help curb the spread of communicable diseases, which are rampant due to overcrowded and unsanitary living conditions. Furthermore, health awareness programs focusing on nutrition, hygiene and preventive care will encourage healthier lifestyles among the population, and enhanced emergency services will ensure quicker response times.
The much needed improvements in Dharavi are going to help uplift the life of its residents. They will be empowering them to lead healthier, safer and better lives with better access to healthcare facilities and to have the access to more and more healthcare opportunities and to live better and healthier lives, which will become a norm for them. In Dharavi, expectant and new mothers struggle to access vital prenatal and postnatal care due to the scarcity of nearby healthcare facilities. The infant mortality rate in Dharavi stands at 33 per 1,000 live births compared to the national average of 29 per 1,000 live births. Similarly, the maternal mortality rate in Dharavi is alarmingly high at 210 per 100,000 live births, far exceeding the national average of 174 per 100,000 live births. This shortage of adequate healthcare services puts both mothers and their babies at significant risk as they miss out on critical checkups, nutritional guidance and timely interventions that are vital for a healthy pregnancy and postpartum recovery. धारावी में अभी कैसा है कि पॉपुलेशन बहुत डेंस हो गया, मतलब बहुत छोटे छोटे घरों में बच्चे रहते हैं, बहुत अंधेरा है, गली गली में बहुत अंधेरा है, तो वहाँ पे जो सनलाइट जाना चाहिए वहाँ तक वो छोटे बच्चों तक पहुँचता नहीं। अभी जैसे हम लोग बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको विटामिन डी चाहिए, तो जैसे सनलाइट चाहिए तो वो सनलाइट बहुत कम आती है, तो विटामिन डी की कमी बहुत सारे बच्चों में होती है। फिर आगे जाके उनको पीलिया होता है छोटे बच्चों को, तो ये एक है। उसके अलावा जैसे अभी यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल है बीएमसी के, तो एक बच्चे को अगर कुछ बुखार आया तो वो सारे बच्चों में फैल जाता है। फिर बच्चे को पेरेंट्स घर पे नहीं रखते, छुट्टी नहीं करवाती कि बाबा अगर किसी बच्चे को बुखार आया है तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को घर पे रखो 4 से 5 दिन दवाई लेके, स्कूल में मत भेजो, क्योंकि एक बच्चे को अगर बुखार आया तो सारे जो उसके क्लासमेट्स रहेंगे उनको सबको बुखार आ सकता है, क्योंकि अभी इतने संक्रामक डिसीज़ हो गए कि वो एक दूसरे को जल्दी से फैलते हैं। The pronounced difference in healthcare quality highlights the urgent need for improved maternal care in underserved areas like Dharavi. The redevelopment will bring better maternal and child healthcare services to Dharavi, helping to close this gap. Waterborne diseases continue to pose a significant challenge in Dharavi, affecting many families due to poor water qualities, inadequate sanitation and improper waste disposal within the community. These conditions lead to frequent hospital visits and medical treatments, imposing a substantial financial burden on them. हम स्कूल में जाके भी ये कैंपेन करते हैं जहाँ पे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि मतलब उनके पेरेंट्स के लिए बोलते हैं कि घर पे जाके हमें बोलना है कि हमें गर्म पानी उबाल के उसको ठंडा करके स्कूल में भी वाटर बॉटल लाना है। इसके अलावा हम लोग स्कूल के जो भी अपने बीएमसी स्कूल है उनके प्रिंसिपल्स और उनके एचओडी जो है उनसे मिलके पानी जो गंदा है तो उन पे हम लोग क्लोरीन का टैबलेट देते हैं जो वो अपने टंकी में डालते हैं। हम लोग घर घर पे जाके आशाएं टैबलेट क्लोरीन डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जिससे वो अपने एक पानी में डाल के टैबलेट वो पानी स्वच्छ रखे और वो पानी पिए, क्योंकि अभी जैसे गैस्ट्रो है, जुलाब लगता है बच्चों को, तो वो डिसीज़ ये पानी की वजह से ज़्यादा होता है। कोलेरा है तो वो ना हो इसके लिए हम लोग टैबलेट क्लोरीन घर घर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ भी उनको लगा सिम्टम तो अपने नज़दीकी दवाखाने में आके वो जांच करवाते हैं। The reconstruction of Dharavi will address critical health challenges by introducing clean drinking water and establishing proper sewage systems, offering families living here a real chance at healthier lives. These improvements are expected to drastically reduce the incidence of waterborne diseases, which have long plagued the community. By providing access to safe water and improved sanitation, the project will help break the cycle of illness and financial strain.
Education is the key to breaking the cycle of poverty, but in Dharavi, there are limited opportunities and it is really difficult for the children here. If you look around, there is a lack of basic infrastructure, outdated computers, and access to digital learning resources are limited, which leads to these students being discouraged and therefore their dropout from school, those rates increase, which further pushes them away from the opportunities to lead a healthier and a better life. In Dharavi, the primary education enrollment rate is 85%, while the secondary education enrollment rate drops sharply to 50%, and higher education enrollment is as low as 10%. These alarming statistics suggest that many students face significant barriers that affect their long-term prospects and opportunities. मैं पिछले 17 साल से बीएमसी स्कूल में काम कर रही हूँ एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो वहाँ जब बच्चे आते हैं तो बच्चे स्कूल में आने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, बट घर का जो माहौल है, घर के रूम्स उनके छोटे छोटे हैं, उस वजह से या फिर रात में घर में जो काम चलते हैं, किसी मेस का काम चलता है या कोई और कारखाने रहते हैं, उसके वजह से उनको प्रॉपर नींद नहीं मिलती है और नींद नहीं मिलने के वजह से वो स्कूल में लेट आते हैं या कभी कभी उनकी छुट्टी भी हो जाती है। और अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ अगर मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो स्कूल में आएंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, खेल में भी परफॉर्म करेंगे और पढ़ाई में भी। तो इधर स्पेस बहुत कम है, हम लोग को खेलने के लिए जगह नहीं है और सब वाटर के पाइपलाइन डाले हुए हैं, पानी के पाइपलाइन। इधर से जाओ तो उधर एंगल लगते हैं, उधर से पैर फिसलता है, जगह बिल्कुल शॉर्ट है। तो एक रीडेवलपमेंट हो जाएगा तो हम लोग के लिए जगह मिल जाएगी, अच्छा हो जाएगा, खेलने के लिए कूदने के लिए जगह मिल जाएगी। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और अपने इधर कुछ साफ़ सफाई भी नहीं रहता है, क्लीन एंड नीट नहीं है। एक घर में 2 फैमिली रहती है, स्पेस बहुत कम मिलता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत होती है स्पेस के लिए। Geeta Chandrasekhar Swami is a resident of Dharavi, where she lives with her husband and 2 children. Despite her best efforts, Geeta struggles to provide quality education for her kids in the overcrowded and under-resourced schools in the area. She wants a better education system with modern facilities so that her children can thrive academically. Geeta hopes for change, as she believes education is the key to breaking the cycle of poverty and ensuring a brighter future for her family. Geeta Chandrasekhar Swami is a resident of Dharavi, where she lives with her husband and 2 children. Despite her best efforts, Geeta struggles to provide quality education for her kids in the overcrowded and under-resourced schools in the area. She wants a better education system with modern facilities so that her children can thrive academically. Geeta hopes for change, as she believes education is the key to breaking the cycle of poverty and ensuring a brighter future for her family. डेवलपमेंट अगर धारावी का करना है तो पूरी तरीके से होना चाहिए। स्कूल अगर रीडेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में 2-3 ऐसे स्कूल बनने चाहिए, एटलीस्ट 2 स्कूल ऐसे बनने चाहिए जो स्टेट सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, फीस बिल्कुल ना हो, बच्चों के लिए टोटली फ्री हो, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए और उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए ताकि वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। At the core of Dharavi lies a story of grit, determination and unwavering ambition. Now Dharavi might be known as Asia's largest slum, but it is also the hub of innovation and entrepreneurship. And today we're going to make you meet one of its brightest stars. Mahesh Singh, a young karate teacher in Dharavi, is dedicated to empowering children through martial arts. He teaches karate not only as a means of self-defense, but also as a pathway for his students to potentially build their own careers by opening karate academies in the future. Mahesh's passion for teaching has inspired many children in the community, giving them the skills and confidence to pursue their dreams.
यहाँ से जो बच्चे लोग सीखे हैं वो DSO मैच जो स्कूल गेम होती है जो गवर्नमेंट करवाती है, वहाँ से बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं और बच्चे इवन इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेले और कुछ बच्चे हमारे जो है वो टीवी पे भी दिखे हैं। अब बच्चे जो मार्शल आर्ट्स भी करते हैं वो हर जगह पे एक्टिव रहते हैं, स्टडी में भी एक्टिव रहते हैं या इवन अदर कितनी भी कोई भी गेम है वो सारे गेम में बच्चे एक्टिव रहते हैं। मार्शल आर्ट्स अगर जो बच्चे करते हैं वो, और उनको फ्यूचर में उनको इसमें करियर भी है। अगर बच्चे सीखते हैं तो आने वाले फ्यूचर में वो अपना एकेडमी भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी उनको जनरेट होती है। One of his most promising students, Nazreen, has already made a mark by representing the state in karate competitions. कराटे सीखने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और सर ने बहुत सारा हमें अच्छा लाइन दिया, एजुकेशन वहीं से किया और फिर यहाँ से सर ने हमें बहुत सारे बड़े बड़े जगह पे सर हमको लेके गए, वहाँ पे हमको टूर्नामेंट खिलाया बड़े बड़े जगह पे, वहाँ पे हमारा बहुत नाम हुआ। उसका बेनिफिट मुझे स्कूल में हुआ, मुझे 2 बार स्कॉलरशिप मिला 10,000 का, मैं 2 बार गई, वहाँ पे मेरा नाम हुआ, वहाँ पे हमारा फ़ोटो लगाया, बहुत अच्छे से हमको किया। The lack of vocational training in Dharavi limits the access to a stable employment for the residents. This leads to a limit in the qualifications that they can get, which in turn means that they end up being in low-wage employment jobs which are very unstable. Therefore, they don't have a regular source of income and therefore end up lacking financial stability. The transformation of health and educational infrastructure in Dharavi promises not only immediate benefits but also long-lasting positive impacts. By enhancing health outcomes and educational attainment, future generations will be better equipped for success. Improved access to quality education will empower Dharavi's youth to pursue higher education and promising career paths, driving economic upliftment. धारावी में डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि डेवलपमेंट नहीं होने से यहाँ पे अब तो थोड़े 2-3 स्कूल हो गए जो 10th या 12th तक है। इसके पहले तो कोई स्कूल ही नहीं था जो 10th तक था, मतलब 7वीं तक। तो क्या होता था, बच्चे बाहर पढ़ नहीं पाते थे तो उनका एजुकेशन रुक जाता था। जैसे साइन जाना है, माटुंगा, दादर, बैंड्रा, यहाँ एडमिशन लेना है तो गरीबी के कारण कुछ बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ क्या BMC की स्कूल में लोग पढ़ते थे। तो एक तो सबसे बड़ा पर्पज़ ये वो है कि डेवलपमेंट होगा तो लोगों का भी विकास होगा, क्योंकि बच्चों जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कूल बनेंगे, गार्डन बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। स्कूल बनेगा तो बच्चों को एजुकेशन होगा और एजुकेशन होगा तो उनका रोजगार होगा। 30-40 साल से सुनता है कि धारा टूटने वाला है, कि ये बड़ा रूम मिलने वाला है, बिल्डिंग में जाने वाला है, धारा टूटने वाला है, टूटने वाला। कभी टूटेगा? अभी हमारा तो हो गया पूरा। अभी जब बच्चे लोग भी आया से बराबर हो गया, उसके बच्चे लोग भी हो गया, तो भी धारा टूट रही है। बड़ा मकान मिल रहा है, कभी मिलेगा? हम जाएगा बाद मिलेगा बच्चे लोग के लिए। वो लोग का तो अच्छा होना मांगता है, हम लोग का तो जाने दो। आगे का पीढ़ी का अच्छा सी रहने मांगता है बच्चे लोग को। इसको गार्डन मांगता है, शिक्षण मांगता है, वो लोग का अच्छे से स्कूल मांगता है। अभी है क्या पहला सर का? नहीं है। अभी अच्छे से सोच रहा है बच्चे लोग का अपेक्षा जास्ती है अपने से भी। डेवलपमेंट करना है तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए और डेवलपमेंट को हम फेवर करते हैं, पूरी तरह से फेवर करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से ऑल ओवर इंडिया ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्रीवे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, तो धारावी का रीडेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लोगों की अपनी टर्म कंडीशन है, गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए, लोगों के डाउट्स क्लियर करने चाहिए। जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है उसे दूर करना चाहिए और एक ओपन चैलेंज की तरह से गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और लोगों के बीच में आके इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी ही अपने मुकाम तक पहुंचा देना चाहिए। First I said slum construction, reconstruction, second is physical infrastructure, and third most important for the community is the social infrastructure. What do I mean by that? It consists of building hospitals, schools, educational institutions, community buildings, libraries, or let's say some training centers, and also even religious structures, temples, mosques, all have to be accommodated within the redevelopment, because it is not just a physical construct, it is a social construct, right? It is social engineering that is involved in this. So, all these three things have to be properly conveyed to the community, and their involvement is most important, because this project cannot succeed unless all the stakeholders come together, right? All stakeholders, most important stakeholder is the local community.
the transformation of public health monitoring systems will ensure continuous improvements and proactive responses to health trends. Ultimately, this redevelopment will significantly elevate the quality of life in Dharavi, breaking the cycle of poverty and fostering a more prosperous and resilient community. Dharavi, building a healthier future with brighter minds.